नमस्कार आपण समस्त को यह भिडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज भिडियो में आपण सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 2 यूनिट 3 जहाँकि सोशल मूवमेंट आम इंडिया कौन कौन सब सोशल मूवमेंट होता तार आम कि 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर टी। तो वीडियो स्टार्ट करवा जो मैंने कि नोट्स चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दीजिए आप नोट्स पाइपर। व्हाट इज सोशल मूवमेंट कौन बोले सोशल मूवमेंट कौन सोशल मूवमेंट कहले सोशल मूवमेंट सारे टाइप ऑफ लार्ज ग्रुप एक्शन एटा कौन ना गोटे लार्ज ग्रुप जने दी जन नहीं गोटे लार्ज ग्रुप ऑफ एक्शन कार्य इट फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यू यह फोकस करे कौन ना गोटे स्पेसिफिक कौन आम पॉलिटिकल और सोशल इश्यू अच्छी। सोशल मूवमेंट्स आर क्लोजली कनसर्न विथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम आ कौन ना कनेक्टेड थाए क्या सहित ना आम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम सहित। What are the elements of social movement? Social movement element कौन? A social movement is a collective behavior. Social element गोटे collective behavior. It extends beyond a single event on community. यह कौन था गोटे बाहर था गोटे स्पेशल बियॉन्ड कम्युनिटी बाहर था सोशल मूवमेंट कौन पूरा लार्ज ग्रुप एक्शन हम आगे देखले। सोशल मूवमेंट्स इन्वॉल्व सिस्टमैटिक इफेक्ट व्हिच इज द चेंज ओरिएंटेड। गिव सम एग्जांपल ऑफ सोशल मूवमेंट के सिंपल जेपर कि ओके। तो सोशल मूवमेंट्स कैन बी रिफॉर्म मूवमेंट रेडिकल मूवमेंट पीसफुल मूवमेंट एंड वायलेंट मूवमेंट। तो यही प्रकार सोशल मूवमेंट हो पारे। फास्ट रिफॉर्म आइबा रेडिकल पीसफुल शांतिपूर्ण हिसाब से आउ वायलेंट माने किसी हिंसात्मक उपाय। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट? गोटे सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट भितर डिफरेंस कौन था पार्थक्य कौन था? The movement when it enters the area of social responsibility affecting public domain is known as a political movement. तो फर्स्ट आप देखले कौन ना the movement when it enters area of social responsibility सामाजिक affecting किसी प्रभाव पकाए public domain is known as a political movement. The object of social movements are social transformation और जो social movement ऑब्जेक्ट है ताकि जपर कि सोसाइटी समाज को ट्रांसफॉर्मेशन कर परिवर्तन आने। पॉलिटिक्स इज लोकेटेड ओनली इन द पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टी लोकेट थे। सो सोशल मूवमेंट्स आर सेड टू बी ब्रॉडर इम्प्लिकेशन देन पॉलिटिकल मूवमेंट। तो आम कहीपर जेहेतु पॉलिटिकल खाली पॉलिटिकल जो मूवमेंट ता पॉलिटिकल पार्टी थाए कि सोशलटा पूरा सोसाइटी थाए तो यह गोटे ब्रॉड मूवमेंट आम कहीपर। व्हाट इज रिफॉर्म मूवमेंट? रिफॉर्म मूवमेंट कौन ना रिफॉर्म मूवमेंट इज ए टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट that aims to bring social and political system closer to the community ideals. Some reform movement aim for a change to custom and moral norms. The trade union movements are such type of movements. So जो सब trade union movement हुए ताहा सब reform movement रो हम कहि परिबा type. What is radical movement? Radical movement are dedicated to change the value system in a fundamental way. ଗୋଟେ fundamental way रे हम सब value system को change करिया। The opinion that rights and freedom should be given to the people. से कौन जो अधिकार और जो स्वाधीनता लोक मान दिया। दे ऑल्सो वांटेड भोटिंग राइट्स टू बी गिवेन टू द बोथ मेन और से लोक उभय पुरुष और महिला को भोटिंग राइट को दिया रेडिकल मूवमेंट कहुए। काइंड ऑफ कहगला आम कौन गोटे जेंडर इक्वालिटी को आम ध्यान दिखती उभय पुरुष और महिला को कि जेंडर को इक्वाली ट्रिट करवा अपॉर्चुनिटी देवा। तो आम कह बुझीपर। What is innovation movement? Innovation movement is also called reformist movement. It aims at bringing certain changes in the system, not transforming the system completely. It attempts to bring about changes for the more efficient, responsive and workable system. What is conservative movement? Conservative movement कौन ना conservatism is a political and social philosophy promoting traditional social institution context of a culture and cultivation civilization. It wants to preserve the existing norms and value. Okay, conservative movement कहले conservatism is a political and social philosophy. Conservative first बुझ ना गोटे political और social गोटे philosophy कहीं ना promoting traditional social institution in context of a culture and civilization. It wants यह चाहे जो conservative movement wants to preserve the existing norms and value. What is peaceful movement? A peaceful movement is a social movement that seeks to achieve ideals for world peace. Peaceful मान शांतिपूर्ण सब मूवमेंट करा जेपर कि गांधी जी करथिले अहिंसा आंदोलन। ओके, It aims to bring social change through symbolic protest, civil disobedience,
economic and political non-cooperation, American civil rights movement, civil disobedience movement are the example of peaceful movement. Okay. What is violent movement? Violent movement कहले the violent movements usually armed movement. Various movements which resort to violence fails under this category. It is organized struggle not only to overthrow the existing government but also socio-economic structure of the society. यहाँ को violent movement कहा जाए. What is old movement? तो old movement कौन ना the Marxist theoretical framework focusing on class structure is said to an old movement. They are also called classical movements. These movements primarily focus on the static power and on class consciousness of participants. What is global movement? Global movement कौन ना global movements are social movements with global objectives and goals. तो ग्लोबल आम करें ग्लोबल सोशल मूवमेंट जहाँकि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा विश्व में कौन कौन रहता है ताको फोकस करिया. फॉर एग्जांपल मूवमेंट सच एज द वर्ल्ड सोशल फॉर्म, द पीपल ग्लोब एक्शन एंड द anarchist movement seek to change the society at a global level. What is local movement? ग्लोबल माने विश्व स्तर जो मूवमेंट हुए. लोकल मूवमेंट कौन ना लोकल भी हो. तो लोकल मूवमेंट्स आर फोकस ऑन द लोकल एंड रीजनल ऑब्जेक्टिव्स. These movements has a local sum. The movements like protecting a specific natural area, lobbying for the power laws, lower of tolls of in a certain motorway, or preservation of a building area. The example of movements. Okay, ताको local movement कहा जाए. What do you mean by relative deprivation theory? Relative deprivation theory कौन? The relative deprivation theory was given by American scholar Denton Morrison. This theory believes that the social movements are temporary aberration and not an ongoing process of change. According to this theory, a person feels relatively deprived when he does not get a fair share of chances. What is mass society theory? Mass society theory कौन ना mass society theory argue that social movements are made up of individuals in large societies who feel insignificant or socially detached. It is based on the basic of idea that people who are socially isolated, especially vulnerable to the appeals of the extremist movements. तो यहाँ देखो जो extreme mass society theory कले एक experiment movements हम कोई परिका. What is new social movement? New social movement कौन? The new social movements are highly participative and have strong program of action. These social movements, जो new social movements, sought to alter the prevailing structure of power, project values of justice, equality and freedom, adding new dimension up to them. तो new social movement तो आम जानिबा कथा जे नुआ सब कोन ताके निजर किछि वन स्ट्रक्चर बनिबे of power, project value of justice, equality and freedom, adding new dimension to them. It is also marked by rise of a new social force. What are the reasons of new social movement? New social movement कौन कौन reason थे जेपरि कि urbanization, industrialization, mass education, communication, technology सब थाए ता कारण सब new social movement रो काहे कि होई थाए. What are the basis of new social movement? New social movement रो basis कौन कौन ना new social movements in the West are predominantly Middle East based. In the third world countries, social movements are predominantly popular among working class, organic intellectuals including teachers, professionals, intelligentsia officer, their service and leaders. तो मॉडर्न न्यू सोशल मूवमेंट जो है मॉडर्न जो वर्ल्ड थे थर्ड वर्ल्ड रे पॉपुलर एमंग वर्किंग क्लास, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल इंक्लूडिंग टीचर, प्रोफेशनल्स, ओके, इंटेलिजेंसिया ऑफिसर, देयर सर्विस लीडर. तो है न्यू सोशल मूवमेंट थे पॉपुलर थे. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया? इंडिया जो न्यू सोशल मूवमेंट कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी? तो दे रिप्रेजेंट द पीपुल, द डाउन ट्रोड इंडियन मासेस. दे क्लाइम टू फाइटिंग फॉर ऑप्रेस्ड ग्रुप सच एज दलित एंड आदिवासी. ओके, दे क्लेम तो आम मन मुवमेंट की कहीं करियो कौन असुविधा मूवमेंट करियो
तो मुवमेंट आम देखिले जो शांतिपूर्ण उपाय अच्छे पीसफुल मुवमेंट अच्छी किसी भावलेंट मुवमेंट अच्छी तो एम हुए दलित मान आदिवासी मानक दलित को रखा जाए अप्रेस को रखा जाए मुवमेंट करती दे क्लेम टू बी फाइटिंग फॉर प्रोडक्शन द एनवायरमेंट आउ परिवेश को सुरक्षा आम आगे पढ़ा जो इनभायरमेंटल सब कौन कौन मुवमेंट्स होती चिपको आंदोलन आपेको आंदोलन ओके नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सब आगे आगे देखा व्हाट इज पिजेन मुवमेंट्स द पिजेन मुवमेंट कौन द पिजेन मुवमेंट कहले द पिजेन रिवोल्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड ऑपरेशन व्हेन देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज deterioration of the economic condition may be due to price rise or famine so there is a rising aspiration of peasants to improve their condition तो peasant movement कौन तांके मते सेन तांको असुविधा हला तांको हला सेमान बहुत शोषण हेले कहा द्वारा होतरा ना शोषण हेले आ ऑपरेशन व्हेन देयर इकोनॉमिक कंडीशन जेतो तांकर आर्थिक कंडीशन थिला ता बहुत धीरे खराब हे गला काहे कि ना ड्यू टू प्राइस जो राइस आ फेमाइन रो जो प्राइस थिला जेतरे चार्जेस हला सो देयर इज ए राइजिंग एस्पिरेशन जहाँकि तुमको प्रेरणा दिला जो ना आमको एथर मुवमेंट करा पड़ो आम शोषण आ ऑपरेशन को दली टपिक रही आम मुवमेंट करवा तो ताहा पेजेंट मान द्वारा है व्हाट इज नक्सलबारी मुवमेंट कहले कौन द नक्सलबारी मुवमेंट वाज स्टार्टेड इन मे 24 1967 इन द नक्सलबारी ऑफ वेस्ट बेंगल नक्सलबारी गाँव में नक्सलबारी मुवमेंट आंदोलन स्टार्ट है चारू मजुमदार वाज द इंस्पिरेशन ऑफ नक्सल लीडर्स तो तार लीडर थे चारू मजुमदार इट्स ऑब्जेक्ट वाज टू स्नैच द लैंड्स फ्रॉम दोज बिग जमींदार्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द टिलिंग फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर व्हाट इज बोडो मूवमेंट कौन द बोडो मूवमेंट हैज एमर्ज्ड एज ए पावरफुल ऑटोनॉमी मूवमेंट ऑफ आसाम तो बोडो मन आसाम एरिया होता बोडो मूवमेंट द बोडोस अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन लॉन्च्ड ए मूवमेंट फॉर ए सेपरेट होमलैंड नेम बोडोलैंड दिस इज नोन बोडो मूवमेंट तो आसाम सब जो स्टूडेंट यूनियन थे से कौन कले ना बोडो लैंड बोली गोटे होमलैंड सेपरेट यूनियन को माने सेपरेट होमलैंड को कहले जे लॉन्च करिया कहले ताहा बोडो मूवमेंट जना जाए व्हाट इज तिभागा मूवमेंट कौन ना तिभागा मूवमेंट एक्सप्लोइटेड इन 1946 इन वेस्ट बेंगल दिस मूवमेंट वाज वन ऑफ द ग्रेट पोस्ट वार पिजन एग्रेशन इन द वेस्ट बेंगल तो वेस्ट बेंगल होता 1946 द लैंडलेस एंड पुअर पिजन वुमेन फॉर्म्ड फाइटिंग ट्रॉप्स कॉल्ड नारी बाहिनी एंड टू लीडिंग रोल इन डिफेक्टिंग द गेन्स ऑफ मूवमेंट वुमेन इन तेलंगाना मूवमेंट तो तेलंगाना मूवमेंट कौन है Women played an important role in Telangana movement. The Rozgar of Hyderabad were private militia organized by Quasi Rajbi to support the rule of Nizam, responsible for mass killing, shooting, etc. So women with their husband and brothers were fighting against Rozgars and Nizam police. तो से को पुलिस अगेंस्ट मैंने करते तेलंगाना रेहा होता तेलंगाना मूवमेंट ओके राइट अबाउट द कैंपेन अगेंस्ट विडो इमोलेशन जो कैंपेन कौन 1987 ए केस ऑफ वायलेंट डेथ ऑफ यंग वुमेन केम टू पब्लिक अटेंशन 18-year रूप कनवर ऑफ ड्यूलर ऑफ राजस्थान was burnt to death her husband prayer it's become sati later on with the protection of women organization the Sati Prevention Act 1987 was enacted by government of Rajasthan in 1987 तो सती जो प्रथा ताकू हटागला सरकार सती प्रिवेंशन एक्ट को इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 1987 रे ताकू खरा रखाला द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन तो ये सब आम ब्रीफली आप डिस्कसन करने आम से नोट्सटा केवल नोट्स ही देखुं कहीं जो आम 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन देखा से सब ब्रीफली डिस्कसन करेंगे खाली आम 2 मार्क्स पर्सपेक्टिव्स आम जस्ट ओवरऑल देखुं तो द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन कौन द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन वाज सेटअप बाय स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 अंडर द कमिशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 जो वुमेन एक्ट द कमिशन हैव द पावर जो नेशनल कमिशन फॉर वुमेन हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर रिफेड हैव ऑल द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट ट्राइंग ए सुइट ओके
राइट अबाउट निर्भया केस एंड वुमेन मुवमेंट तो यह गोटे इंटरेस्टिंग माने कौन चैप्टर आसला आपन बहुत समय जानते इन डिसेम्बर 2012 2012 डिसेम्बर ए फीमेल मेडिकल स्टूडेंट वाज वायलेंटली गैंग रेप्ड ऑन ए मूविंग बस एंड देन डम्प्ड ऑन टू द हाईवे injured and unconscious. Thousands of civilian protesters made peaceful demonstration at India Gate to change the criminal law and prosecute the attackers. By this protest, both state and central governments announced several steps to ensure the safety of women. तापर केस को देखला पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन महिला मान सुरक्षा पाई किसी स्टेप बहुत गुड़े स्टेप ने व्हाट इज एनवायरमेंट मूवमेंट परिवेश आंदोलन तो एनवायरमेंट इज ए टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट इट इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप एंड कोएलिशन दैट आइडेंटिफाई कॉमन इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन माने परिवेश सुरक्षा कॉमन इंटरेस्ट होले इन एक्ट टू ब्रिंग चेंजेस इन गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस What is Chipko movement? Chipko movement कौन? The Chipko movement in Uttarakhand was started by Gandhian activist. It began in 1973 in Mundal of Uttar Pradesh for preservation of forest in Himalayas. Sundarlal Bahuguna was associated with the Chipko movement. तो सुंदरलाल बहुगुणा को नेतृत्व होता चिपको आंदोलन टी राइट अबाउट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन ओडिशा ओडिशा रे किसी जो परिवेश सुरक्षा आंदोलन तो ए मेजर कंसर्न ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ओडिशा इज डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बानाइजेशन मॉडर्नाइजिंग यूजिंग लास्टेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लास्टेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी आम जो ओडिशा इंडस्ट्री क्षेत्र में अर्बानाइजेशन होती एवं मॉडर्नाइजेशन होती टुडे देयर इज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अगेंस्ट डैम्स इंडस्ट्री इन सच डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट इन भेरियस पार्ट ऑफ ओडिशा किंतु बर्तमान सब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जपरिक डैम बनवा इंडस्ट्री आउ किसी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट सब को भेरियस पार्ट को विरोध कर अपोज कर देयर इज ऑल्सो एंटी इंडस्ट्रियल मूवमेंट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो यहाँ सोशल मूवमेंट रही तो इंडिया जो आम ओडिशा आम आगे देखा डिस्कसन करवा जिते आम 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जिते सबको ब्रीफली डिस्कसन करवा तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो जो मैंने क्या नोट्स चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देती आप जॉइन होकर नोट्स डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट टाइम यूनिट 4 को डिस्कसन करवा थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।